So this is the problem number 17 out of 300 problems. So what we have to do, we have to write a C program in which we have to give a number to the program, and the program will calculate its unit digit. Unit digit is so simple. Let me give you one introduction, brief intro of it. See, 1 2 what happened, bro? Wait, huh? Yeah, I don't know what happened to this. Oh, okay. So suppose this is the number 1 2 3. So what is the unit digit? 1 2 3 has unit digit 3. Simple. Unit digit 3. So we have to write a program in which we give a number and the program will give me that unit digit of 1 2 3 is 3, like this. Okay, so for that the concept is, when the program will give me the unit digit, is any logic? Yeah, there is a logic. If I divide it by 10, then what will it give me? See, if I divide by it by 10, then what will it give me? 12. It will give me 12, right? Because 12 times you will divide, then you will get 120 and 3 will be your remainder. So you will use divide and you will get quotient. This is what QOTENT, this is quotient. And but if you do like this is modulo and 10, it will give you remainder and 3, remainder 3. So by divide it will give you quotient, right? QUOTINT quotient. And by modulo, people call it modulo will give it remainder. So if you want to find unit digit, then simply take modulo 10. Okay, we will do it. So first of all, we have to write include stdio dot h, then int main. We have to take number from user, right? So for that I have to, मुझे यूजर को एक मैसेज देना पड़ेगा कि एंटर अ नंबर. ओके, फिर मुझे स्कैनअप करके उस नंबर को स्टोर इनपुट लेना पड़ेगा स्कैनअप से %d, और वो नंबर कहाँ जाएगा? @a में. ओके, फिर मैं a को मॉडुलो 10 कर दूंगा. a मॉडुलो 10 a मैं प्रिंट कर देता हूँ सिंपली. मॉडुलो 10 बाद में छोड़ो. ओके, printf unit digit of %d is %d. सिंपल. अब देखो, पहले %d की जगह मुझे नंबर चाहिए तो ये, और दूसरे %d की जगह मुझे चाहिए a मॉडुलो 10, मतलब यूनिट डिजिट, क्योंकि मॉडुलो ऑपरेटर मुझे यूनिट डिजिट देगा. ये समझ लो कि किसी भी नंबर को आप 10 से मॉडुलो करते हो तो उसका रिमाइंडर देता है, मतलब उसका आखिरी वाला डिजिट देता है, मतलब यूनिट डिजिट देता है. ठीक है, इतना ही सिंपल था वो. रन करते हैं. फालतू में कुछ भी ये मत दे रहे भाई, ये जो कंपाइलर कुछ भी दे देता है, फालतू में एरर देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती नहीं है. CLS आ जा. अरे भाई क्या होगा. ठीक है, दोबारा रन करते हैं इसको. हाँ, आ गया CLS. ओके, तो इसको दोबारा रन करते हैं.
इंट मेन क्या है, इंट मेन क्या, अच्छा रिटर्न 0, ओके वार्निंग बताते जाओ यार भाई। हाँ, एक बार CLS कर देता हूँ मैं। अब रन करते हैं प्रोग्राम को। अब देखो जैसे मैं 1 2 3 डालता हूँ तो इस बार 3 आएगा, मॉडुलस 3, यूनिट डिजिट ऑफ द 1 2 3 इज 3, ओके। अब आपको लग रहा होगा कि 3 डिजिट का ही बनाया, नहीं 4 डिजिट डालते हैं, 1 2 3 4, देखो क्या आएगा, मॉडुलस 4। चलो 43 2 1 डालते हैं इस बार, कुछ भी डाल देते हैं ऐसा अगड़म तिगड़म। अब देखो एंटर 2 आएगा, मॉडुलस 2, यूनिट डिजिट इज 2। तो ये बहुत आसान था, बस ये करना है, मॉडुलो करना है, मॉडुलो 10 करेंगे तो आ जाएगा।